यहाँ पर देखिए, एक ये बच्चे के 3 स्कूल हैं। पहला क्लासरूम है, क्लासरूम नंबर 1 इज द होम, द फर्स्ट सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं द फैमिली द प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, वो परिवार जो मिलजुल के प्रार्थना करते हैं, मिलजुल के प्रगति करते हैं। यहाँ पे माता भी हैं, पिता भी हैं, बेटा भी है, बेटी भी है, सब मिल के प्रार्थना कर रहे हैं। घर में गीता भी है, कुरान भी है, बाइबल भी है, गुरु ग्रंथ साहब भी है, और घर के ऊपर परमात्मा का प्रकाश और सब दिव्य अवतारों का प्रकाश इस पर पड़ रहा है। यानी सबकी शिक्षाएं बच्चों को बताई जा रही हैं। ये है क्लासरूम नंबर 1, फर्स्ट सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है। ये हमारा घर है, घर हमारा प्राइमरी सोर्स है। माता पिता पहले शिक्षक हैं, तो पहला आज हमारा 21वीं शताब्दी का घर ऐसा बनना चाहिए। दूसरा क्लासरूम नंबर 2, ये है स्कूल और यूनिवर्सिटी, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है। तो ये क्या है? स्कूल और यूनिवर्सिटी इज द लाइट हाउस द सोसाइटी to provide meaningful education, spiritual direction, guidance and leadership to students, their parents and the society in general। तो बच्चों की पढ़ाई तो हो, लेकिन प्रार्थना भी ज़रूरी है। पढ़ाई और प्रार्थना दोनों पर महत्व दिया जाए, परमात्मा से बच्चे को जोड़ा जाए, और इसके साथ साथ नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल परसेप्शन एंड एलोक्वेंट स्पीच और यूनिवर्सल वैल्यूज़, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, सर्विस टू द वर्ल्ड एंड एक्सीलेंस इन ऑल थिंग, ये 8 गुण बच्चे में दिए जाएं। यानी नॉलेज यानी ज्ञान, और ज्ञान है भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार का संतुलित ज्ञान दिया जाए। और इसके साथ उस ज्ञान की विजडम, विजडम के माने उसका प्रॉपर यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वाइजली अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंसी ऑफ सिचुएशन। जिस परिस्थिति में हम हैं, उस परिस्थिति में उस समस्या को हल करने के लिए हमें विजडम चाहिए। तो कौन सी विजडम? विजडम कैसे? नॉलेज का प्रॉपर यूज़ हम करें। और कौन सी नॉलेज? जो मटेरियल, ह्यूमन और डिवाइन, 3 तरह की नॉलेज है। बच्चे को एक और हम भौतिक ज्ञान कराएं, अंग्रेजी, भूगोल, गणित का, तो दूसरी ओर हम उसे सामाजिक ज्ञान या पारिवारिक ज्ञान या मानवीय ज्ञान कराएं, और तीसरी ओर ईश्वर का ज्ञान कराएं। तो ये तीनों मिलकर नॉलेज बनती है और विजडम। और बच्चे को स्पिरिचुअल परसेप्शन, शरीर भौतिक है, हमारा जो सोच है, परसेप्शन है, दृष्टिकोण है, वो आध्यात्मिक हो। और एलोक्वेंट स्पीच, लेट एवरी चाइल्ड बी लाइक ए लॉयन रोरिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ नॉलेज एंड विजडम। हर बच्चे को ज्ञानवान बनाए, बुद्धिमान बनाए, और ज्ञान और बुद्धिमत्ता की बातों को ऐसे कहे जैसे जंगल में शेर दहाड़ रहा हो। तो प्रारंभ से ही बच्चों को जो ये हमारे मॉडल क्लासेस के ज़रिए, वर्ल्ड पार्लियामेंट के ज़रिए, सर्वधर्म प्रार्थना के ज़रिए, वर्ल्ड यूनिटी प्रेयर के ज़रिए जो इन्होंने छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर जो एलोक्वेंस दिखाई है, एक फ्लॉलेसनेस और एक फ्लुएंसी दिखाई है इंग्लिश में, वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। इसके अलावा यूनिवर्सल वैल्यूज़, ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानवता एक है, विश्वव्यापी जानकारी, आज बच्चों की पार्लियामेंट कराई और इसमें सारे विश्व के बच्चे बनाए, और उन्होंने बताया हर विश्व में, हर देश में कैसे कैसे शिक्षा हो रही है। सर्विस टू द वर्ल्ड, सारे विश्व की सेवा का भाव, वन डे आई विल यूनाइट द वर्ल्ड, और एक्सीलेंस इन ऑल थिंग, चरित्र भी उज्जवल हो, मैनर्स भी हों, एटिकेट भी हो, उसका हैंड राइटिंग भी एक्सीलेंट हो, इंग्लिश में भी, मैथमेटिक्स में भी, साइंस में भी, जो भी उसके विषय हैं हर विषय में एक्सीलेंट हो, और मैनर्स में एक्सीलेंट हो, तो सारी चीज़ें हों। और इसमें तो ये हमारा एक स्कूल है। और स्कूल का काम, यूनिवर्सिटी का काम केवल बच्चों को ज्ञान देना नहीं है, प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन, स्पिरिचुअल डायरेक्शन एंड गाइडेंस एंड लीडरशिप टू स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड द सोसाइटी ऑल्सो। तो समाज के काम, स्कूल का काम है पेरेंट्स को और समाज को भी मार्गदर्शन देना। और तीसरा है ये समाज, बच्चे का क्लासरूम नंबर 3 है, सोसाइटी है, थर्ड सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है। इसमें ये बहुत ज़रूरी है समाज में ये बात आना कि ईश्वर एक है। ये सारी दिव्य पुस्तकें एक परमात्मा से आई हैं, ये सारी मानव जाति के लिए हैं। गीता का ज्ञान केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, ये सारी मानव जाति के लिए है। त्रिपिटक का ज्ञान जिसमें लिखा है कि सम्यक ज्ञान सब बराबर हैं, ये ऊंच नीच गलत है, ये सब ब्राह्मण बड़े ऊंचे हैं, ये क्षत्रिय उससे नीचे हैं, ये वैश्य और भी नीचे हैं, शूद्र सबसे नीचे हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई ऐसी व्यवस्था तो गीता में और कुरान में और बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहब में कहीं भी नहीं है। न तो गीता में है, न त्रिपिटक में, न बाइबल में, न कुरान में, न गुरु ग्रंथ साहब में, न किताब इकदस में। तो किसी रिवील्ड बुक में तो नहीं है, परमात्मा की तो वाणी नहीं है।
ये तो मनुष्यों की बनाई है। हमारे महर्षि मनु जी ने ये संदेश दे दिया। जैसे रामायण में भी एक चौपाई है, बाकी सब चौपाई तो गीता के अनुसार एक है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ढोल गमार तो हमारे सारे अवतारी थे, क्योंकि ये तो कोई स्कूल कॉलेज तो था नहीं इसमें जो पढ़ लेते, तो सभी बेपढ़े लिखे थे। तो क्या ताड़न के अधिकारी हैं? ढोल गमार शूद्र, शुद्ध अशूद्र तो कोई होता ही नहीं है, न कोई शूद्र है न शूद्र है, सब बराबर है। परमात्मा ने किसी को शुद्ध अशुद्ध बनाया ही नहीं, ये भी गलत है। और पशु, पशु तो बहुत काम आता है। गाय हमें दूध देती है, उसका बछड़ा हमारे खेत में हल चला के हमें अनाज पैदा करता है। भैंस हमें दूध देती है, बकरी दूध देती है, तो क्या ताड़ना के अधिकारी है? और नारी, नारी न होती तो अवतार कहाँ से आते, ये सारी सृष्टि कहाँ से आती? तो नारी क्या प्रताड़ना के योग्य है? तो ये ऐसी चीज़ें भी कभी कभी संत और महात्मा लिख देते हैं, तो उसको तोड़ना चाहिए इन किताबों पे जो अनएयरिंग है। तो ये अनएयरिंग नहीं है। संत और महात्माओं की वाणी में गलती हो सकती है, ऋषि मुनियों की वाणी में गलती हो सकती है, बट ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड ये किसी अवतार की वाणी नहीं है। ये किसी अवतार ने ऐसे ने नहीं लिखी जिसका जन्म हुआ हो और जिसकी मृत्यु होती हो। अवतारों का तो जन्म भी हुआ, मृत्यु भी हो गई। ये तो वाणी उसकी है जिसका न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है, एक परमात्मा की है। और परमात्मा क्या ज्ञान गीता का हिंदुओं के लिए भेजेगा? और हिंदुओं के लिए भेजेगा तो क्या वो परमात्मा कहलाएगा? परमात्मा तो तभी कहलाएगा जब उसका ज्ञान सारी मानव जाति के लिए हो। तो ये ज्ञान सारी मानव जाति के लिए है। त्रिपिटक का ज्ञान सारी मानव जाति के लिए है। बाइबल का ज्ञान, करुणा का ज्ञान सारी मानव जाति के लिए। पृथ्वी का साम्राज्य उनका होगा जिनके जीवन में करुणा और दया होगी। और ये कुरान शरीफ का ज्ञान जिसमें लिखा है खुदा रब्बुल आलमीन है, पहली आयत है खुदा की। ये खुदा इस सारी सृष्टि को बनाने वाला है। रब्बुल मुसलमीन नहीं है, मुसलमानों का रब नहीं है, वो सारी सृष्टि का रब है। एक खुदा के बंदे हैं दुनिया के इंसान, सारे दुनिया के इंसानों को बनाने वाला एक अल्लाह है। सब मिल के रहें, प्यार से रहें। तो कुरान शरीफ का संदेश भाईचारे का है, मोहब्बत का है, प्रेम का है। कहीं इसमें नफरत की जगह नहीं है। यहाँ तक लिखा है कि यदि कोई आदमी भूखा हो तो जब तक उसको रोटी आप न दे दें तब तक खाना मत खाइए। बड़ी बड़ी इसमें तालीमात दी गई हैं। President Donald Trump, President of the United States of America, do or die. Karo ya maro. We request you to keep your promise of uniting the world, or else we are all destined to perish in a nuclear war, which does not seem to be very far. The future of 7.5 billion people of the world, including 2.5 billion children of the world and the generations yet to be born, has become progressively more insecure and unprotected during past over 7 decades since the bombing of Hiroshima and Nagasaki and the recent spread of international terrorism, global warming, stockpiling of weapons of mass destruction, and fear of Third World War and nuclear holocaust. It is now a situation of do or die for all of us. Dear President Trump, bravo and kudos to you. Only the brave can say what you have said. On the following dates, some historic statements by President Donald Trump. You said, on 15th December 2015 in Las Vegas, USA, while addressing US electorate during your campaign for US presidential election. I think I'm going to bring unity to the world. That's what I do. I bring peace and I bring unity. You said on 22nd May 2017 at Tel Aviv airport during a visit to Israel. Now we must work together to build a future where the nations of the region are at peace and all of our children can grow and grow up strong and grow up free from terrorism and violence. You said on 24th May 2017
in the Vatican to His Holiness the Pope. I am more determined than ever to pursue peace in the world. You said on 19th September 2017 at the UN General Assembly, New York. Making a better life for our people also requires us to work together in close harmony and unity to create a more safe and peaceful future for all people. You said on 26 January 2018 in Davos, Switzerland, at the World Economic Forum. That we are all stronger when free, sovereign nations cooperate toward shared goals, and they cooperate toward shared dreams. You said on 24th October 2018 in Montessori, Wisconsin, USA. We want all sides to come together in peace and harmony. We can do it. We can do it. We can do it. It'll happen. We are all proud of you as the greatest world leader because you have promised to unite the world and make it a nice place worth living. A meeting of sovereign countries and formation of a world parliament like that of the European Parliament of 28 sovereign countries is the only way to unite the world and bring peace to the world. Some statements made about world unity by great world leaders. Some great world leaders have said, Mahatma Gandhi said, the future peace, security, and ordered progress of the world demand a world federation of free nations, and on no other basis can the problems of the modern world be solved. Winston Churchill, Prime Minister of Great Britain, had said, unless we establish a world government, it will not be possible for us to avert World War III. John F. Kennedy, President of USA, said, we must create worldwide law and law enforcement agency as we outlaw worldwide war and weapons. Dwight D. Eisenhower, President of USA, had said, there must be law, steadily invoked and respected by all nations. For without law, the world promises only such meager justice as the pity of the strong upon the weak. Mikhail Gorbachev, President of USSR, had said, an awareness of the need for some kind of global government is gaining ground, one in which all members of the world community would take part. Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, said, either the world will unite or it will perish. Dear President Trump, many world leaders in the past have said that world unity is required and it is the only solution to save mankind from complete annihilation. But only you have promised you will unite the world and establish peace on the earth. To US public and your voters, to His Holiness the Pope, and to the people of the world. Dear President Trump, you are the first world leader in the history of mankind who has committed to bring about world unity and world peace. You are the greatest leader of mankind who has said that I am going to bring unity to the world. There have been many world leaders before you who have only said that unity of the world is needed. But you are the only one who said that. I think I'm going to bring unity to the world. President Donald Trump created history by befriending North Korean leader. Mr. President Trump, being the leader of the most powerful country in the world, you have shown the greatest capability to leave the past behind by moving ahead for the good of the people of the world with your power of unconditional love. You have lived the words of the great US President Abraham Lincoln, who once said that the best way to destroy an enemy
is to make him a friend. It takes a lot of courage and willpower to embrace a once hostile nation and announce that you share a very special bond with its leader. At the historic Singapore summit on 12 June 2018, you shook hands with Chairman of North Korea, Kim Jong-un, and turned hostility into friendship. This was one of the rarest, unprecedented, and unthought of acts of your courage in the history of humanity. You have forgiven a once hostile country and saved the world from the scourge of war. At your press meet in the White House, you had said, "Anyone can make war, but only the most courageous can make peace. And I will do whatever it takes to make the world a safer place," in response to a question from Time magazine. Mr. President Trump, you had rightfully proclaimed that the past does not have to define the future. Adversaries can become friends. The world too has responded very positively to this development and has hailed you as a strong and decisive world leader who has shattered old diplomatic norms. You have created history, as it was unthought of to get North Korea to take concrete steps towards denuclearization. It is time now to live the great legacy that you have inherited from the US presidents. Your three predecessors had used their decision-making ability vested in them as the US president and used their power to rewrite history as follows. American President Woodrow Wilson initiated the formation of the League of Nations in 1919 through the collaboration of 42 sovereign nations of the world to end World War I, to achieve the shared goal and shared dream of world unity and world peace. Although only 1/4 of the countries of the world attended this meeting of world leaders, and still the formation of League of Nations saved the world from the scourge of World War I. American President Franklin D. Roosevelt initiated the formation of the United Nations in 1945. Initially, through the collaboration of only 51 sovereign nations of the world, to end the World War II, to achieve the shared goal and shared dream of world unity and world peace. Although nearly 1/4 of the countries of the world attended this meeting of sovereign world leaders, and still the formation of United Nations saved the entire humanity from the scourge of World War II. Today, 193 countries are its member, and for the past 73 years, there has been no Third World War. American President Harry S. Truman initiated the formation of European Union by implementing the Marshall Plan in 1948 through a donation of $13 billion to rebuild Europe, which ultimately led to the formation of European Parliament, initially through the collaboration of 6 sovereign European nations, which grew to include 28 sovereign nations to achieve the shared goal and shared dream of unity of European countries, where no nation is required to give up its sovereignty. Since its formation, it has succeeded in preventing wars between otherwise warring European nations and has brought lasting unity and peace in Europe. For the past 70 years, since the formation of European Union, there has been no European war. Dear Mr. Trump, like the above 3 far-sighted and visionary US presidents,
You must now call an urgent meeting of sovereign countries of the world, with even a few countries attending initially, to collaborate to form a world parliament for a shared goal and shared dream of world unity and world peace. In such a new democratic system, every country will enjoy its sovereignty and at the same time will collaborate with other sovereign nations to achieve and realize the shared goal and shared dream of world unity and world peace. Unity is the biggest strength, though a single nation or a rogue nation can threaten or challenge the authority of one nation. However, no single nation or a rogue nation can challenge the authority of the nations that have collaborated. For example, once the League of Nations, with collaboration of 42 sovereign nations, was formed, no individual nation or any rogue nation on earth had the courage to challenge its authority. Then, when United Nations was formed with collaboration of 51 sovereign nations, no individual nation or any rogue nation, howsoever, had the courage to challenge it. And similarly, no nation can oppose or challenge the European Parliament, which is the collaboration of 28 sovereign nations. Unity has strength, and even if a few like-minded sovereign nations can come together and collaborate for a shared goal and a shared dream of world unity and world peace to form a world parliament, no single nation or any rogue nation will have the courage to challenge or oppose this world parliament. We believe that you, President Donald Trump, will take a similar initiative to form a world parliament like that of League of Nations, the United Nations, and the European Parliament to save the humanity from the threat of World War III and a nuclear holocaust. Dear Mr. President, if Third World War were to happen today, the whole of humanity will be wiped out, as it will not be a conventional war like that of World War I or World War II or European War or any territorial war, but it will be a nuclear war, and no one would be left alive in this world. Then there will be no need left to form a world parliament. Abdul Baha, interpreter of the teachings of his father Baha'u'llah, the manifestation of God for this age, who founded the Baha'i faith about 200 years back, made pronouncements on behalf of his father regarding America and her destiny, and prophesied, this American democracy will be the first nation to establish the foundation of international agreement. It will be the first nation to proclaim the unity of mankind. It will be the first to unfurl the standard of the most great peace. And again, the American people are indeed worthy of being the first to build the tabernacle of the great peace and proclaim the oneness of mankind. For America hath developed powers and capacities greater and more wonderful than other nations. The American nation is equipped and empowered to accomplish that which will adorn the pages of history, to become the envy of the world and be blessed in both the East and the West for the triumph of its people. The American continent gives signs and evidences of very great advancement. Its future is even more promising, for its influence and illumination are far-reaching. It will lead all nations spiritually and politically. Abdul Baha said,
True civilization will unfurl its banner in the midmost heart of the world whenever a certain number of its distinguished and high-minded sovereigns, the shining exemplars of devotion and determination, shall, for the good and happiness of all mankind, arise with firm resolve and clear vision to establish the cause of universal peace. They must make the cause of peace the object of general consultation and seek by every means in their power to establish a union of the nations of the world. They must conclude a binding treaty and establish a covenant, the provisions of which shall be sound, inviolable, and definite. They must proclaim it to all the world and obtain for it the sanction of all the human race. This supreme and noble undertaking, the real source of the peace and well-being of all the world, should be regarded as sacred by all that dwell on earth. All the forces of humanity must be mobilized to ensure the stability and permanence of this most great covenant. In this all-embracing pact, the limits and frontiers of each and every nation should be clearly fixed. The principles underlying the relations of governments towards one another definitely laid down, and all international agreements and obligations ascertained. President of America, Harry Truman, had said, "Men make history and not the other way around." In periods where there is no leadership, society stands still. Progress occurs when courageous, skillful leaders seize the opportunity to change things for the better. The world today has become increasingly interdependent. Today, no nation, howsoever powerful, can survive alone. Now is the time when a world leader needs to come forward and take lead to unite all the nations of the world. We believe President Donald Trump is one such leader who can take lead to unite the world by calling a meeting of world leaders and form a world parliament. Abdul Baha had also said, "Do not busy yourself only in your own concerns or the concerns of your own countries alone. Let your thoughts be fixed upon that which will rehabilitate the fortunes of mankind and sanctify the hearts and souls of men." Dear Mr. President Trump, in you we see the strongest and the most compassionate world leader who can rehabilitate the fortunes of mankind by forming a world parliament. If you feel like consulting with us further on this issue, we can come to meet you in the White House. On behalf of 2.5 billion children of the world and the generations yet to be born, as well as the entire humanity, we are looking towards you for your action to call a meeting of world leaders in 2019 and form a world parliament in 2019. If you feel like consulting with us further on this issue, we can come to meet and consult with you. On behalf of 2.5 billion children of the world and the generations yet to be born, as well as the entire humanity, we are looking towards you for your action to call a meeting of world leaders in 2019 to form a world parliament. God bless you. Yours faithfully, Dr. Jagdish Gandhi, Founder Manager, City Montessori School, Lucknow. Convener, International Conferences of Chief Justices of the World, and self-appointed guardian of the world's over 2 billion children of the world and the generations yet to be born.